Hello friends, myself Professor Vinod Shikre. Today we see the last portion of the unit number 3, that is unit water resource engineering. From unit 3, it consists of what is meant by water resource engineering, watershed management, what is meant by irrigation, what are the necessity of irrigation, what are the benefits of irrigation, what are the advantages and disadvantages of irrigation, also the structures involved in watershed management. Let's see one by one. First is what is meant by water resource engineering. It is a branch of civil engineering, deals with the water structures involved in artificial as well as natural irrigation. Water resource engineering is the study and management of equipment, facilities, and techniques that are used to manage and preserve life's most plentiful resource, that is water. In addition to assessing how and the best ways in which to control water as it pertains to water related activities such as irrigation, waste disposal, and canal development. Water resource engineers are also frequently involved in water management to ensure that it's safe to drink both for humans, plants, and animal uses. इसमें water resource engineering means what? The engineering branch deals with the management of water resources. The water resources means the rainfall, that is natural resource of water. From that we uh, store natural water. We get the natural water from rain. That water is stored in some natural sources or artificial sources like dams, lake, etc. And if we required water for irrigation, that water is supplied through canal system. That is work of water resource engineer. In this bit, there are two bits, important two bits, that is watershed and irrigation. First bit we see, that is watershed. Watershed, the definition of watershed is it can be defined as the catchment area of a particular stream or river. Thus, the area enclosed within the watershed line is known as watershed area. Watershed means what? जहाँ पे भी एकादे रिवर, नदी या नाले का पानी जो है, जो कैचमेंट एरिया है, जहाँ से हम इकट्ठा करने वाले हैं, दैट एरिया मीन्स watershed area. Watershed can be defined as the catchment area of a particular stream or river. Thus, the area enclosed within the watershed line is known as watershed area. In a particular watershed area, the area may be plain and or hilly. In hilly area, along with the surface runoff due to rainfall, erosion of soil takes place. Watershed development includes conservation, regeneration, and judicious utilization and management of all resources like land, water, vegetation, animals, and
human utilities in a particular watershed. अब watershed development means what? It includes conservation. उसमें आने वाले रिसोर्स की देखभाल करना, कंजर्वेशन. उसके बाद है रीजनरेशन एंड जुडिशियस यूटिलाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑल रिसोर्सेस. वाटरशेड एरिया में जो भी आने वाले रिसोर्स है उनकी देखभाल करना, जो भी एलिमेंट्स है वाटरशेड में लाइक ट्रीज, सॉइल, उनका कंजर्वेशन और रीजनरेशन करने का. उसके बाद में जो भी वाटर है उसका न्यायपूर्वक उसका डिस्ट्रीब्यूशन. इट इज़ बेनिफिशियल टू ह्यूमन बीइंग्स एज वेल एज एनिमल्स एंड प्लांट्स. जो भी पानी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन ये न्यायपूर्वक होना चाहिए और इक्वली सबको बांटे जाना चाहिए. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, judicially utilization and management of all resources like land, water, vegetation, animals and human utilities in a particular watershed. In a watershed development, it is very important to maintain equilibrium between different ecological factors. जो भी इकोलॉजिकल फैक्टर्स है उनमें बैलेंस रखना, दैट इज़ अ मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट, वो रखते आना चाहिए विद द हेल्प ऑफ watershed management. It is found that when there is a heavy rainfall, most of the rainfall flows as a surface runoff and the water joins streams and then to sea. But in dry season, when the area is dried up, villagers depend on groundwater for different purposes. जब ज़्यादा बारिश होती है तो क्या होता है, वो पानी रन ऑफ यानी कि ज़मीन पे बहता है और वो कोई सी तो भी मेन स्ट्रीम से जाके मिलता है. उसके बाद में वो मेन स्ट्रीम यानी कि रिवर वो समुंदर को जाके मिलती है. इससे क्या होता है, जब भी मानसून में बारिश होती है वो पानी तुरंत नदी में जाके मिलने के बाद में समुंदर से जाके मिलता है. उसका यूज़ बस ज़्यादा होता नहीं है. बट जब मानसून ख़त्म हो जाता है उसके बाद में जो 2 सीज़न है उसमें पानी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है. इसलिए जो बहने वाला पानी है वो पानी का ठीक तरह से मैनेजमेंट करना, दैट इज़ वाटरशेड मैनेजमेंट. ग्राउंड वाटर मे और मे नॉट बी अवेलेबल एवरीवेयर. ग्राउंड वाटर मीन्स जो भी ज़मीन के अंदर पानी है वो हर तरफ कहीं पे ज़्यादा पानी होता है जो कि 12 महीने ह्यूमन बीइंग यूटिलाइज कर सकता है. कहीं पे बस मानसून और कुछ दिन और, लेकिन समर में पूरा ड्राई हो जाता है. इसलिए वो पानी जो भी रन ऑफ यानी कि मेन स्ट्रीम में बह के जाने वाला है उसका ठीक तरह से मैनेजमेंट करना चाहिए. ग्राउंड वाटर may or may not be available everywhere, hence it is very important to opt for watershed management for proper use of water and other resources. So watershed management activity is mostly opted by villagers or by a group of villagers. बारिश का पानी हमको हर वक्त यूज़ आना चाहिए. इसलिए ज़मीन पे आने वाला पानी उसका मैनेजमेंट ठीक तरह से होने के लिए विलेज में के पीपल या मल्टीपल विलेज में के पीपल्स इकट्ठा आके जो मैनेजमेंट करते हैं और जो मैनेजमेंट करना चाहिए, दैट इज़ वाटरशेड मैनेजमेंट. नेक्स्ट पॉइंट इज नेसेसिटी ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट. Water is the best gift of the nature to the living beings. Indian economy is governed by agriculture, crop yield.
पानी जो है वो भगवान ने दिया हुआ सबसे बेहतर तोहफा है, उसका ठीक तरह से यूटिलाइजेशन होना चाहिए। और इंडियन जो अर्थव्यवस्था है वो सबसे ज़्यादा खेती पे डिपेंड आहे. दॅट इज अ कृषी प्रधान देश. भारताला म्हणतात की कृषी प्रधान देश आहे आणि भारताची अर्थव्यवस्था ही सगळ्यात जास्त डिपेंड ही शेतीवरती आहे. दॅट इज इंडियन इकॉनॉमी इज गवर्न बाय ॲग्रिकल्चर क्रॉप इल्ड. यानी की जो भी जे पण उत्पन्न होणार आहे शेतीपासून त्याच्यावरती भारताची अर्थव्यवस्था ही डिपेंड आहे. फॉर ट्रॉपिकल एरिया availability of water throughout the year is of almost important. The different points of importance leading to necessity of watershed management are given. The first point is to increase groundwater potential of land in a particular watershed area. कौन से भी वाटरशेड एरिया में उसमें ज़मीन के अंदर रहने वाले पानी की परसेंटेज बढ़ना ये मेन नेसेसिटी है. जो भी ग्राउंड वाटर पोटेंशियल है वो इंक्रीज होना, दैट इज मेन पर्पज ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट वर्क. सेकंड पॉइंट इज टू इंक्रीज agricultural output and economical conditions of the farmer at village level. जो भी खेती में से उत्पादन होने वाला है, उसका प्रोडक्शन होने वाला है, वो ज़्यादा हो, इसलिए watershed management is necessary. Third one is to conserve and increase ground cover by grasses and ट्रीज. अब ये पॉइंट समझने लायक है कि इसमें क्या है, टू कंजर्व एंड इंक्रीज ग्राउंड कवर बाय ग्रासेस एंड ट्रीज. कंजर्व मीन्स जो भी ज़मीन पे यानी कि हमारे डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसकी वजह से सॉइल का इरोजन ज़्यादा होता है. यानी कि सॉइल जब भी बारिश गिरती है तो पानी के साथ में जो भी मिट्टी है, उत्पादन करने वाली मिट्टी है, वो बह जाती है. वो मिट्टी का कंजर्वेशन यानी कि उस मिट्टी की देखभाल करने के लिए हमारा मैक्सिमम ग्राउंड ग्रासेस एंड ट्रीज से कवर होना चाहिए. ये क्या करते हैं, दैट होल्ड्स द सॉइल. वो मिट्टी को पकड़ के रखते हैं. जब भी बारिश होती है, हेवी रेन होता है, तो ये ग्रासेस एंड ट्रीज क्या करते हैं, जो भी मिट्टी बह के जाने वाले हैं उनको उसको होल्ड करके रखती है. दैट्स वाई टू कंजर्व एंड इंक्रीज ग्राउंड कवर बाय डिफरेंट ग्रासेस एंड ट्रीज. इट इज द थर्ड नेसेसिटी ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट. देन दैट इज द फोर्थ वन इज टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन टेंडेंसी इन अ पर्टिकुलर watershed area. Then to prevent deforestation, that is to prevent organizing deforestation to maintain ecological balance in a particular area. Then to construct different bunds for conservation of soil and water. And ultimate aim of the watershed development is to maintain healthy environment in a watershed area. These are the necessity of watershed management work. ये सब बातें हैं जो कि वाटरशेड मैनेजमेंट करने के लिए उपयुक्त है. इनकी वजह से वाटरशेड करना ज़रूरी है. कंजर्वेशन ऑफ लैंड मीन्स व्हाट, ज़मीन की देखभाल करना. फॉर फॉर्मेशन ऑफ 2 to 3 सेंटीमीटर थिक सॉइल लेयर इट टेक्स अबाउट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. सिंपल 2 to 3 सेंटीमीटर जो भी लेयर बनने के लिए, मिट्टी का लेयर बनने के लिए कम से कम हमको थाउजेंड्स हज़ारों साल लगते हैं. बट टू डिमोलिश
the bold soil layer, one heavy rainfall is sufficient. लेकिन वो सॉइल का बेड यानी कि सॉइल डिस्ट्रॉय या डिमोलिश करने के लिए एक ही बारिश काफ़ी है. इसलिए सॉइल कंजर्वेशन इज नेसेसरी. Soil erosion in general means detachment and transport of soil and soil material by water, wind, ice, or gravity. In general, erosion slips soil from the unprotected lands and moves it down the slope by or land flow from rainfall. The main reason for soil erosion are deforestation, shifting cultivation, leaving land barren without any agricultural activities, absence of drainage facilities and lack of proper मैनेजमेंट. ये सब बातें रिस्पॉन्सिबल है सॉइल इरोजन के लिए. यानी कि सॉइल इरोजन ना हो, ये सब बातें इसमें ध्यान में रखनी चाहिए. उसके बाद में कंजर्वेशन ऑफ वाटर, दैट इज जो भी पानी अवेलेबल है उसकी देखभाल करना. कंजर्वेशन ऑफ वाटर मीन्स स्टॉपिंग द फ्लोइंग वाटर एट प्रॉपर प्लेसेस, allowing it to percolate and using it properly and optimally. जो भी पानी है उसका यूज़ ऑप्टिमम यानी कि जितना चाहिए उतना ही होना चाहिए. और जहाँ पे भी पानी है उसको ठीक तरह से, जहाँ पे यानी कि वो बह के जल्द से जल्द बह के नहीं जाना चाहिए, उसको ये करके बर्न्स करके उसको आड़ना चाहिए. और एक मराठी में है पानी आड़वा पानी जिरवा, यानी कि जहाँ पे भी बारिश होती है वो पानी स्टोर करने के लिए, यानी वो वाटर पर्कुलेट होने के लिए ज़मीन के अंदर. इसलिए हमको कुछ ना कुछ करना जरूरी. दैट इज कंजर्वेशन ऑफ वाटर. इन कंजर्वेशन ऑफ वाटर इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट to know about aerial extent, the magnitude and intensity of rainfall and amount of runoff for deciding a particular conservation technique. पानी की देखभाल करने के लिए हमको कितनी बारिश होती है ये पहले पता होना चाहिए. उसके बाद में वहाँ पे ज़मीन की यानी कि टेंडेंसी कैसे वो भी पता होनी चाहिए. डिपेंडिंग अपॉन द लोकल टोपोग्राफिकल कंडीशन, वहाँ की भौगोलिक कंडीशन कैसी है, अमाउंट एंड टाइप ऑफ रेनफॉल, क्लाइमेटिक कंडीशंस, वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज कंस्ट्रक्टेड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर. पानी का कंजर्वेशन करने के लिए हम कुछ ना कुछ टेक्निक्स यूज़ करते हैं. लाइक कोल्हापुर टाइप वेयर, दैट इज कोल्हापुरी पाट बंधारा फॉर restricting water to join main stream and joining the sea. उसके बाद में चेक डैम्स, डाइवर्जन वियर्स, गली प्लग्स, उसके बाद में बैरेजेस यानी बंधारा, ये सब करना चाहिए. उसके बाद में क्या है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व इन वाटरशेड मैनेजमेंट. The different structures involved in watershed management are: first is contour trenches. Contour trenches means at on a hilly area, some ponds like structures are made due to that the water flowing from top of the hill is stored in that ponds and it will penetrate into the ground. Contour trenches may be either continuous one और staggered one. एक साथ उसको कंटिन्यूसली बना सकते हैं या फिर उसका अल्टरनेटिवली स्टैगिंग कर सकते हैं. कंटिन्यूस कंटूर trenches are shallow trenches dug across the slope of the land and along the contour lines.
that is at same elevations for the purpose of soil and water conservation. They are provided throughout the length. Continuous contour trenches are prepared for sloping terrain having uniform and steep slope and having high rainfall. उसके बाद में है स्टैग्ड कंटोर नीचेस आर prepared in the terrain having non-uniform gentle slopes and having low to medium rainfall. Due to contour trenches, both the purposes of soil and water conservation are served. Along the contour trenches, vegetation growth take place and it leads to favorable development. Land slope is calculated by abney level or depth level. These are the surveying instrument. Soil data can also be obtained to know infiltration rate of water. The cross-sectional area of the trenches is designed to collect the intense storm water in the year of 10 years recurrences interval. The construction procedure of contour trenches involves demarcation of the contour, excavation of soil for desired dimension of the trench, dumping soil towards downstream or trench to form burns, plantation on the burns, or to form grass cover for protection of burns. Following functions are served by contour trenches. First function is infiltration of water to raise groundwater level, to reduce the velocity of water flowing across the slope, to reduce the magnitude of runoff, बह के जाने वाले पानी का उसका रेट कम किया जाता है with the help of contour trenches, and to increase the soil moisture and to check or reduce magnitude of soil erosion. उसके बाद में सेकंड स्ट्रक्चर involved in watershed management is gully plug and loose boulder structures. Gully plugs, these are the burns constructed out of the stones across the stream to conserve soil and water. As shown in figure, this loose boulders are stack on one stack stack on one above the other. Gully plug or loose boulder structure is prepared at location in a like in the gullies just found or at branches of main nala. Second is site at upper reaches of catchment and propose location. The length of gully on upstream of the structures should not be more than 150 to 200 meter. The construction procedure of gully plug involves cleaning of the site and then the excavation of gully to a depth of 0.3 to 0.5 meter. Stones are then placed in the foundation in a compact manner. Sufficient waterway is provided at the center for discharge of water. The burns should be projected 0.3 to 0.6 meter into the stable portion of the sides of the gully to prevent end cutting. The function of gully plug and loose boulder structures are to control the further deepening of the gully, to reduce the velocity of water in a gully portion, to increase the magnitude of infiltration, and to reduce the magnitude of erosion significantly. Then third structure is earthen check burn. Earthen check burns are constructed by using locally available soil
across the stream to check soil erosion and flow of water. Check dams are constructed preferably at some location where depth of gully is less than 2 meter, base slope of gully is less than 10% in the upper portion of catchment. Then gamin structure. Gamin structure is a burn constructed of a stone and wrapped in galvanized chain link. Then masonry check dams, other nala burns, other dams, and underground bandhara. These are some structures also involved in watershed management. Thank you.